24 students, ज़्यादा time नहीं लूंगा आपका, but this is the most important video to score maximum marks in audit subject. Yes, I'm going to give you some really important hacks. Now, whatever you have prepared, it's done, dusted. Okay. Whatever remaining time you have, whatever time you want to give, it's okay. Relax now and hear out this video properly. Okay. This video will be in simple English with little bit Hindi here and there so that pan-India students can understand. Okay. Now, I'm just sharing my screen. I've developed a document for you. Go through that document. Okay, so this document contains the paper hacks. Now, what will be your 3-hour strategy? I've been saying this since years now, all right, and it has been successful for the students because many of my students have scored All India first also in audit subject. Now, coming to the strategy, 3 hours strategy. You will divide your paper into 3 phases. आपका सबसे पहला phase 1 will be super confident phase. I'm talking about normal 90-95% of students, all right, will have around, let us say, 40 minutes of super confident phase, where you will feel like 25-30 marks paper is such, जहाँ पे आप full marks score कर सकते हो. First priority you will give to descriptive paper. I repeat, first priority you will give to descriptive paper, according to me. Now then later on it depends upon you. All right, so in the first 15 minutes that you get, you'll go through the descriptive paper. आप last 2 लाइन देख लोगे क्वेश्चन का. All right, last 2-3 lines, 4 lines here and there. थोड़ा एक glance करना है in between the lines. All right, in between the lines, जैसे the moment you saw this document, क्या दिखा आपको 3 hour strategy. All right, भले अंदर का पता नहीं चला, but at least इतना दिखा. So you'll have to just glance through the document, to go through that, and just see, okay, this is the question. Okay, I'm a little confident over here. Okay, now few questions you will feel like, yes, I'm super confident. Search for professional ethics questions. Search for Caro questions. Search for factual questions. All right, like non-performing assets in case of banks, if you have done that. Okay, or principles in case of ESG, SDG. All right, so such kind of very factual questions. Factual questions should be given first priority. I repeat, factual questions should be given first priority, where you feel that, there are 4 points and I know the 4 points. Okay, that will be given the first priority. So this will be your super confident phase. See, your first task will be कि खुद को सेव करना है. In that, the super confident phase of around 20-25 marks will go on for 40 minutes or so. Then comes your MCQ. MCQ by default will be in super confident phase only. यानी super confident phase में first descriptive. All right, whatever descriptive you are confident with, super confident means जो easily याद आ रहा है, you will finish it off. Then you'll go to MCQs. MCQs 30 marks, maybe in 40-45 minutes you'll have to solve them. Now, how to solve MCQs? I have just released one case scenario based MCQ videos. So I've given over there the tips on how to solve it. But if you have not got the time to see that video, then अगर बड़ा सा case study है, first you will look at the questions asked from that case study, so that you will come to know, okay, ये case studies from this particular chapter, or it is a mixture of these 3-4 concepts, so that you start thinking about it. Okay, अब आपको पता ही है case study में तेरा 4-5 paragraphs and every single paragraph के ऊपर एक question होता है. All right, so try to, don't try to be too fast, but try to focus on the material areas only. Okay, when it comes to that. अब MCQ में कैसा है ना, you read the question, आप effort लेते हो, you think about it. All right, then whatever is your first instinct, go ahead with that. Okay, और आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ बिल्डिंग घर से शूट करो, इनोवेशन काम चल रहा है, so if there is disturbance please forgive me. All right, so if you are, once आपने उतना effort ले लिया, you thought about the question, now attempt it. आप ये सोचोगे कि आई विल अटेम्प्ट इट लेटर ऑन, ऑलराइट, देन इन दैट केस अगेन यू विल हैव टू रीड दैट क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट इट. सो 2-3 बार यू कैन नॉट रीड द क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट इट, यू कैन नॉट गिव दैट मच टाइम. ऑलराइट, attempt it. If you're not confident, then little bit with pencil you can attempt, and then you can come back, but at least mark it out. Okay, and finish it. एक बार MCQs को लेना है, खत्म ही करना है. You cannot say that 10 MCQs I will solve at a later stage or something like that. Don't do it. All right, and let me tell you, everyone is expecting too much from MCQs कि MCQs में मुझे 30 में से 30 आना चाहिए ना 25 आना चाहिए. That is good expectation, but institute को भी पता है that you are expecting this, and that is why they may play a little bit with you in MCQs. All right, and that is the reason that I always suggest that जो confident descriptive है that you attempt first, and if they play a little bit with MCQs, it's okay, be brave. All right, कौन क्या कर लेगा भाई तुम्हारा, you are in CA final. All right, you have achieved this, you have come to, आप ये stage तक आए हो. All right, so trust yourself. Okay, now your phase 2 will be medium confident phase. Okay,
In that medium confident phase, there will be few questions, like 3-4 questions ऐसे होंगे where you feel like एक reasonable idea आ रहा है आपको, but you don't know the exact wordings. Okay, then in that case it's okay, just attempt it and trust your brain. जो आपका first instinct आता है उसे लिखो, जो आपका first instinct आता है उसे लिखो. After the phases, just a minute, I've given that some common instructions, probably बोल देता हूँ. Every single answer will be on a new page. That means 1A on one page, 1B on one page, 1C on one page, 2A on one page, 2B, and so on. If there are few questions जो बीच में आपको attempt नहीं करने, let us say your 1A and 1C is in super confident phase and your 1B is in medium confident phase, still आप heading दे दो 1B, leave that page and move ahead. कोई कुछ नहीं करता, लास्ट में कुछ नहीं बिगड़ता, don't worry. Even if that page is empty, nothing happens. They'll have to move ahead and see your entire paper. Okay. Now coming back to the medium confident phase, whatever comes to your mind, just write it. It is not about writing lengthy answers. It is about writing quality answers. तो आप अगर quality answers लिखोगे, alright, आपको marks मिलेगा. Even if 2 point tally होते हैं, do it. जैसे for example a simple chapter like internal audit, आपको सिर्फ 1 या 2 point याद आ रहा है, attempt it. Because if you feel that वो point तो 100% right है, then you will have to go for it. Alright, because I have seen it very clearly. कौन से बच्चे पास हो जाते हैं, कौन से बच्चे पास हो जाते हैं, जिनको सबसे कम जीरो होते हैं. द स्टूडेंट्स हु हैव लीस्ट नंबर ऑफ जीरोस. ऑलराइट, so even if you don't have full marks in all questions, it is okay, but try to reduce your number of zeros. Okay, so that goes into your medium confident phase. The last one will be around 8-10 marks का phase होता है. On an average for normal student around 8-10 marks का phase होता है, where it will be low or no confident phase. All right, whatever jinga junga comes to your mind, just write it. Okay, do not hold back, just write it, write it, write it, write it, write it. Okay, and last 2-3 minutes compulsorily you will keep for checking credentials on the paper. Last 2 minutes के सारे credentials, roll number and all the formalities that need to be done, whether they are done or not, because I don't want any kind of other surprises after the paper is over. Okay, so broadly this is how you're going to think. Now comes to paper presentation and how to attempt. Okay, so everyone over here, the biggest problem that students face is how to identify a question from auditing standards. Standards auditing का question है, find out कैसे करें. Alright, और कौन सा standard है वहां तक पहुंचना itself is a task. Listen to me. Audit of historical financial statements रहेगा, not future. Audit of historical financial statements तो ऐसे category में से है. Review word रहेगा, review of historical financial statements. Alright, assignment के अंदर you are conducting review यानी moderate examination of historical financial statements, then SRE category से है. अच्छा, future financials या let us say सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कंसेप्ट पता है, नहीं पता है, 1-2 मिनट जस्ट गिव मी. एंड प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी आया, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ भी आया तो इट इज SAE कैटेगरी. ऑलराइट, देन लास्ट में लेट अस से प्रैक्टिसिंग CA हैज बीन अपॉइंटेड जस्ट टू गिव सम फैक्चुअल रिपोर्ट कि भाई ये ट्रेड रिसेबल्स का खाली कितना ट्रेड रिसेबल्स है बताओ हमको. ऑलराइट, कोई एग्जामिनेशन एश्योरेंस ओपिनियन नहीं है. और लेट अस से यू हैव टू जस्ट कंपाइल यानी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऐसा वर्ड है. तो SRS 4400 और 4410 रिस्पेक्टिवली फॉर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स 4400 एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट 4410. पहले तो ये देखना अच्छे से प्लीज, दिस वाज नॉट द प्रॉब्लम टिल नवंबर 23 टाइम. खास करके जो नवंबर 23 टू May 24 ट्रांजिशन कर रहे हैं, बी केयरफुल. ऑलराइट, सो फॉर यू एवरीथिंग वाज एसए नवंबर 23 में. अब May 24 फ्रेशर्स का टेंशन नहीं है, बट द पीपल हु आर ट्रांजिशनिंग, बी केयरफुल. You have all of these categories. So first will be to look at the category of the question. All right. So ऐसे for example, आपको स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता हूं, तो जैसे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो ऐसे 800 क्लिक होता है. ऑलराइट, फॉर द स्टूडेंट्स हैव डन इट. बट लेट अस से अगर मैंने बोला रिव्यू ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इट इज SRE. मैंने बोला यू हैव बीन अपॉइंटेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इट इज SRS 4410. राइट, सो ये ध्यान से देखना असाइनमेंट कौन सा है. ऑलराइट, प्रॉमिस प्रॉमिस. देन लिसन टू मी. फिर मैंने क्या किया है, हर एक स्टैंडर्ड का नंबर, टाइटल, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट स्टैंडर्ड एंड कौन सा 1 मार्क का कंटेंट है वो स्टैंडर्ड का, विच यू कैन राइट. दैट टेबल आई हैव गिवन ओवर हियर. ओके, सो आई होप दैट दिस विल हेल्प यू. मैं फटाफट गो थ्रू करूं, आई विल नॉट रीड द होल कंटेंट, वो आप करो. ऑलराइट, बट आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई. फॉर एग्जांपल,
अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल एथिक्स वाली कोई बात है, फर्म की लीडरशिप पॉलिसीज वगैरह की बात है, SQC 1। ऑलराइट, ऑडिटर की बेसिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन वाली बात है, ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, तो इनहेरेंट लिमिटेशंस वगैरह, तो ऐसे 200। देन लेटर ऑफ एंगेजमेंट की बात है, कंटेंट्स ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट, चेंजेस इन द अग्रीड टर्म्स वगैरह, तो ऐसे 210। बट अगेन, अगर समझो रिव्यू में लेटर ऑफ एंगेजमेंट की बात चल रही है, या लेटर से इफ इट इज लेटर ऑफ एंगेजमेंट इन केस ऑफ SAE एंड स्टफ और प्रोस्पेक्टिव, तो फिर ध्यान रखना खाली लेटर ऑफ एंगेजमेंट करके यू कैन नॉट कम टू ऐसे 210। ओके। देन देर इज एन एंगेजमेंट पार्टनर जिसको अपने ऑडिट टीम की क्वालिटी का ध्यान रखना है, तो दैट इज ऐसे 220। वर्किंग पेपर्स का नॉर्मली तो ऐसा क्लियर रेफरेंस आता नहीं, बट एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग पेपर्स यू कैन राइट ऐसे 230। ऑलराइट, एंड एंगेजमेंट पार्टनर का क्वालिटी का 220 बोला ना, हाँ। एंड एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग पेपर्स यू कैन राइट ऐसे 230। वर्किंग पेपर्स का ओनरशिप, रिटेंशन, असेंबली, ऑल ऑफ दैट इज देयर इन SQC 1। ओके। देन कोई भी तरीके से फ्रॉड का कुछ भी इंडिकेशन आता रहेगा केस स्टडी में, देन यू विल हैव टू राइट रेफरेंस ऑफ ऐसे 240। देन टैक्सेशन लॉ, पोल्यूशन कंट्रोल लॉ, दिस लॉ दैट लॉ, लॉ की कंप्लायंस की बात चलती रहेगी, देन ऐसे 250। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जब भी लिखो ऐसे 260। इंटरनल कंट्रोल में बहुत बड़ी वीकनेसेस मिली है, एंड हाउ टू, आई मीन हाउ टू कम्युनिकेट विद दैट, कम्युनिकेट दोस वीकनेसेस, तो ऐसे 265। मोर देन वन ऑडिटर आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऐसे 299। कोई भी प्लान प्रोग्राम स्ट्रेटेजी वगैरह का आया तो ऐसे 300। ऑलराइट, रिस्क एनालिसिस का या अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल कंसेप्ट के ऊपर कुछ लिखना है अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स एंड स्टफ, खास करके कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो ऐसे 315। देन मटेरियलिटी के ऊपर कुछ भी डिस्कशन हो रहा है ऑफ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, तो ऐसे 320। कभी भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल वर्ड लिखो तो उसके साथ साथ ऑलवेज गिव ऐसे 330, बिकॉज विद दिस रेफरेंसेस एंड स्टफ एक मार्क तो वहां से मिल ही जाता है। आउटसोर्सिंग के क्वेश्चन में ध्यान रखना, आई रिपीट, आउटसोर्सिंग के क्वेश्चन में ध्यान रखना, इफ एक्स हैज आउटसोर्स टू वाई, और अगर एक्स के ऑडिटर हो आप, तो ऐसे 402, ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूजर एंटिटी। इफ एक्स हैज आउटसोर्स टू वाई एंड वाई के ऑडिटर हो जहां पे वाई हैज अपॉइंटेड यू की आउटसोर्सिंग के ऊपर अश्योरेंस दो। ऑलराइट, इफ वाई हैज अपॉइंटेड यू टू गिव अश्योरेंस ऑन आउटसोर्सिंग, देन इन दैट केस you have to give SAE। ऑलराइट, सो प्लीज बी केयरफुल whether you're auditor of user entity or service organization, तो SA 402 and SAE 3402। misstatements you are communicating getting rectified, anything with respect to that, ऐसे 450। ऐसे 500 audit evidence is general reference never used in exams। already जब anywhere with audit evidence you can write ऐसे 500 you can write it, but not necessary। stock audit, stock counting, litigation, legal cases, to identify legal cases, anything with respect to segment information, ऐसे 501। थर्ड पार्टी confirmations is 505, but please be careful, जब आप लॉयर से confirmation लेते हो for litigation and claims, तो that is ऐसे 501 and not 505। alright, then if your first year with the client and the question deals with opening balances, then it is 510, initial audit engagement opening balances। anywhere where you're using ratios, comparisons, trend analysis and stuff ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड कंप्लीशन स्टेजेस, तो ऐसे 520। लेकिन वही रेशियोज अगर आप यूज करते हो स्टार्टिंग में एट रिस्क असेसमेंट स्टेज, तो दैट इज ऐसे 315। एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग ऐसे 530। एस्टिमेट्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, लास्ट लाइन देखना वेदर इट इज आस्किंग यू द FR का कोई नॉलेज तो नहीं पूछ रहा है। इफ इट इज आस्किंग अबाउट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड स्टफ और ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज, देन ऐसे 540। एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप कंपनीज, होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, ऑलराइट, रिलेटेड पार्टीज, कोई भी एंगल से अगर हो, वन ऐसे 550 का लाइन लिख ही देने का, राइट। And any event which has occurred after the balance sheet date, any event which has occurred after the balance sheet date, AS for Ind AS 10, whatever you are doing, all right, but उसके साथ साथ ऐसे 560 of to always right। but ध्यान रखना for events which are occurring before the date of auditor's report, before signing, उसके लिए एक अलग standard introduction है, and for facts that become known to the auditor after the date of auditor's report, for that we have separate introduction। then any question which creates minutely भी अगर आपको लग रहा है कि गोइंग कंसर्न पे थ्रेट हो सकता है, ऑलराइट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में यू मे फील दैट गोइंग कंसर्न पे थ्रेट हो सकता है, देन वन पैराग्राफ ऑफ ऐसे 570 ओके, और स्टैंडर्ड कंटेंट आई एम रिटन ओवर हियर व्हाट यू कैन राइट। ऐसे फाइट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड एज अ सपोर्टिंग रेफरेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स, ऑलराइट, जहां पे मैनेजमेंट से हम डिक्लेरेशन लिखवाते हैं। एंड इफ यू आर द ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी या इफ यू आर द ऑडिटर ऑफ द हेड ऑफिस, ऐसा कुछ रोल दिया आपको, तो ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। इफ यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होगा, तो देयर इज नो, मतलब उसमें कोई आई डोंट हैव टू गिव यू सम हिंट हाउ टू आइडेंटिफाई, तो ऐसे 610। एक्सपर्ट अगर ऑडिटर ने अपॉइंट किया, इंजीनियर एक्चुअली वगैरह अपॉइंटेड बाय द ऑडिटर, वेदर उसकी टीम में हो या एक्सटर्नली हायर किया, बट इफ ऑडिटर इज अपॉइंटेड देन ऐसे 620। बट इफ एक्सपर्ट इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, listen to me, if expert is appointed by the management, then it is ऐसे 500। ऑलराइट, ओके।
देन रिपोर्ट के फॉर्मेट के ऊपर कुछ भी हो 700, की ऑडिट मैटर 701, मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, दूर दूर तक कोई भी बात हो सीधा 705, अकाउंटिंग के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन देना, एवरीथिंग इज डिस्क्लोज प्रॉपर्ली बट स्टिल क्लैरिफिकेशन देना, एम्फोसिस ऑफ मैटर, ऑडिटिंग के ऊपर इफ यू वांट टू गिव क्लैरिफिकेशन देन अदर मैटर, ऑलराइट। अच्छा, एनी क्वेश्चन विच डील्स विद प्रीवियस ईयर का कुछ एडजस्टमेंट, लास्ट ईयर का कुछ एडजस्टमेंट है जिसका इंपैक्ट आ रहा है ऑन करंट ईयर, ऑलराइट, so that previous year column, any question dealing with previous year column ऐसे 710 reference, alright। Annual report versus financial statements, annual report versus financial statements, then it is ऐसे 720। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, स्पेसिफिक इन्वेस्टर स्टेक होल्डर वगैरह के लिए बनाए, दैट इज ऐसे 800। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जिसका आप रिपोर्ट दे रहे हो, दैट इज 810 नॉट 805, ऑलराइट। एंड लेट अस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कुछ स्पेसिफिक आइटम है, इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको ऑडिट मिला है तो ऐसे 805। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2400। बट अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या हाफ ईयरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू ऑडिटर कर रहा है, इफ दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन, ऑलराइट, देन इट इज 2410। एक एमसीक्यू तो ऐसा है खाली है टू फाइंड आउट कि 2410 कहाँ पे एप्लीकेबल है, alright। And future financial information 3400, 3402 as I told you appointed by the service organization, and 3420 is pro forma। pro forma क्या होता है, पास्ट को मॉडिफाई करके दिखाते हैं कि आज जो हुआ वो पहले हुआ होता, तो वॉट एवर हैपेंड टुडे, व्हाट इफ इट हैड हैपेंड अर्लियर, ऑलराइट, दैट इज प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट। एनी सच प्रोफॉर्मा वर्ड, देन दैट इज SAE 3420। And agreed upon procedures with the client, I've given one example also, that is SRS 4400। And compilation engagements is where you're preparing summary, preparing pro forma, preparing prospective, you are using your financial and accounting expertise, that is SRS 4410। That is how you will go through this, and try to give the reference, okay। Now listen to me, standards mein there are some application based questions and it is going to be there, okay। I have, that is why, given a complete summary of the module questions also to the students to go through it। This was specifically done for students who are transitioning from November 23 to May 24, और शायद उनको उतनी आदत नहीं थी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। एक ही फंडा है, वॉट एवर नियरेस्ट कम्स टू योर माइंड, राइट इट। ऐसे ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी का कुछ है, 505 क्लिक हो रहा है, एग्जैक्ट कंटेंट क्लिक नहीं हो रहा है, राइट द रेफरेंस एटलीस्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस, जितना आई हैव टू गिव यू दैट फ्रीडम कि आप लिखो, ओके, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल एंड अप टैलिंग विद फ्यू आंसर्स, ओके। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में यू विल ऑलवेज फील दैट कुछ ना कुछ रह रहा है, आई एम नॉट 100% एक्यूरेट, दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल टू फील, इवन प्रोफेसर्स फील द सेम इन केस ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू राइट इट, और एकदम ना ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो वैसे मत लिखना, थोड़ा सोचना है ना, अगर क्लिक हो गया है कि ऐसे 505 है, तो from which part of 505 do you think this is the question? Is it from confirmation request? Is it from confirmation procedure? Is it from response आ गया है उसके बाद evaluating reliability of the response? Alright. अच्छा, ऐसे 501 stock audit, is it about the procedures of stock audit or is it about stock audit आज नहीं हो पाएगा, कल करना पड़ेगा, some such practical discussion. Alright, so think a little bit and then you are going to write. But think only little bit. you कुछ ज्यादा टाइम थिंकिंग में मत जाने देना। अच्छा, लास्ट में अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहते हैं वो लोग दैट हाउ विल यू डील विद दिस सिचुएशन इन ऑडिट रिपोर्ट, तो पूरा पैराग्राफ ड्राफ्ट मत करो, राइट। अगर ओपिनियन रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड कुछ है, तो ओपिनियन, एम्फोसिस ऑफ मैटर, ऑडिट के ऊपर क्लैरिफिकेशन है, अदर मैटर, वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर कुछ है तो की ऑडिट मैटर, कंपनीज एक्ट का कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, कारो है, वॉट एवर इट इज, एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट, ओके। डोंट ट्राई टू राइट टू मच। वो लोग ना ड्राफ्टिंग चाहिए रहेगा ना, तो ड्राफ्ट अ सुटेबल पैराग्राफ और समथिंग लाइक दैट, दे विल क्लियरली टेल यू, okay। So relax on that particular part now, okay। Draft the paragraph only and only if they're asking you to draft। Now coming to professional ethics, I hope standards के लिए थोड़ा clarity आया आपको। Now coming to professional ethics, first identify question CA in practice का है, CA in service का है, all right। If the question is silent then normal it is for CA in practice, yeah, it could be from those clauses जो सारे members के लिए होते हैं, like not providing information to the ICA and stuff, all right। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, एक बार खाली क्लॉज रेफरेंसेस यू कैन जस्ट ग्लांस थ्रू, ऑलराइट, जो हम जिस तरीके से लिखते हैं, और इफ यू वेरेवर यू हैव स्टडीड यू कैन जस्ट ग्लांस थ्रू द क्लॉज रेफरेंसेस, आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आंसर लिखते वक्त समटाइम्स इट हैपेंस कि यू हैव रिटन राइट क्लॉज नंबर, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग फुल मार्क्स, ऐसा क्यों होता है? उस क्लॉज रेफरेंस लिखना है, क्लॉज लैंग्वेज इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इट इज फाइन। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट फेमस क्लॉज, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में हम कैसे लिखते हैं, सीएम प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट,
If he invites, if he solicits clients or any professional work through advertisement, circular, interview or by any other means, all right. See, मेरे से भी एक दो वर्ड रह गया, right? No professor will give such a light demo, but I'm telling you, मेरे से भी एक दो वर्ड रह गया, but that's okay. Alright? You cannot run behind that every single word याद आना चाहिए. Okay. Broadly, materially, if you're writing it, you will get your marks. I have seen students getting the marks, but थोड़ा content heavy होना चाहिए. It should not be complete bro language. Alright. Then also try to explain the ethics, that it is not in the dignity of the profession to get the work in such a manner. Like clause 8 part 1 first schedule, like communication with predecessor auditor. All right. Practicing CA, I mean the incoming auditor should communicate with the outgoing auditor in order to know the reasons for professional objection, if any. All right. Especially part 1 first schedule, part 1 second schedule, तो जितने भी schedules वाले हैं, there you have to write little bit of ethics. अभी कुछ कुछ जगह पे ethics बैठते ही नहीं है. For example, maintenance of branch office, every branch office should have a separate in charge. All right. Now, what ethics you are going to maintain over? What ethical lines क्या लिखोगे आप section 27 में? All right. So please, wherever ethics are possible, you please write, 1-2 lines, but write something. जैसे अभी ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस स्टडी आता है तो पीपल एंड अप जस्ट राइटिंग क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल. दे डोंट गिव रेफरेंस ऑफ, अगर समझो ऑडिट का केस स्टडी है, ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है, दे डोंट गिव रेफरेंस ऑफ एसए 200 या एसए 240. अगर वो पता चल रहा है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पर्सन इज नेग्लिजेंट, ऑलराइट, देन इन दैट केस ही इज नॉट मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. सो लिटिल 1 or 2 लाइंस एथिक्स इफ यू राइट, ये फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए है. And then it is fine. But अगर आपको लोड आ रहा है इस वक्त कि नहीं नहीं सर इतना तो नहीं हो पाएगा, then it's okay. कॉमन सेंस से लिखने बोल रहा हूँ, कुछ बाय ऐड करने नहीं बोल रहा हूँ. सो क्लॉज रेफरेंस, केस स्टडी, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये तो सब लिखते हैं. इफ यू राइट 1 or 2 lines ethics or 1 or 2 lines theory behind that, then it is great. Okay. For CARO 2020 reporting, please use such kind of line as per clause dash under paragraph 3 of statement of CARO 2020. Auditor needs to report whether CARO का एक memory code I have just given it on my Telegram channel. And when it comes to CARO, okay, reporting में word by word सब कुछ, again, we are humans, we may not be in a position to write it. थोड़ा 1 mark इधर उधर कट होता है, but that's okay. Alright, clause reference should be proper. Clause, let us say 16A, 16B. Alright. So now let us say आपको सब clause reference याद नहीं रहे, but clause 16 NBFC का उतना याद रह रहा है, that's okay. अभी you have to go with what you know, यार, come on, right? We are not here, robots or machines, okay? That's okay. Whatever you can, please try your level best. And listen to me. Greatest batsman on Mother Earth, right? Sachin Tendulkar, the god of cricket. उनकी भी कुछ तो weaknesses थी when it comes to batting. Alright. In the last 7 to 8 years of his career, maybe more than 10 years, after the tennis elbow surgery, उन्होंने कुछ shots मारना बंद कर दिए थे. Still he remained number 1. Virat Kohli of today's generation also has some weaknesses. But it is not about the weaknesses. It is about how well you are in your strengths. Okay? खाली विराट कोहली का ग्रेटनेस क्या है या सचिन का ग्रेटनेस क्या था कि जहां पे वो वीक है वहां पे आउट नहीं होते थे, वहां पे वो स्कोर नहीं करते थे, बट आउट भी नहीं होते थे. सो प्लीज ट्राई टू गो विद अ काम माइंड. डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ. ऑलराइट, we will be able to go with this. Okay, I've tried my level best to stay with you. I will stay with you throughout. All the very best. God bless you, bacha. God bless you. God bless you. Fingers crossed. Okay.